my voice audible, friends? Online friends, is my voice audible? So let's start. So where we were yesterday? Online friends, my voice is audible, screen is visible. If any concern, please raise your disconnect हो गए. What has happened to Teams? Net connectivity poor है क्या? नेट ही नहीं. आपण ज्याला कॉल केला आहे तो आता कोणाशी बोलत आहे. आपण चलो, let's start. So we were on which illustration number? Page number क्या है? New book. 300 है? ये वाला है क्या? This one ना? चलो, illustration number 4. ये हो गया था क्या? नहीं, सब लोगों का हो गया क्या? Everybody solve this homework? होमवर्क सॉल्व किया? नहीं, सॉल्व नहीं किया.
So let's solve it. Let's solve it over here. Not an issue. लेकिन घर पे प्रैक्टिस करते जाओ. Then only it will be helpful. See. So illustration number 4. A manufacturing company is divided into 3 production department, A, B and C. The production is against specific customer order only. So job order costing है. Specific customer order मतलब job order costing. All orders are dissimilar and they are through all the three. They go through all the 3 departments. They are dissimilar. Manufacturing cost for the given period were as follows. So manufacturing cost है. Direct material they have given directly at total level 1,80,000. Direct labor 90,000. Means department A, B, C. Indirect manufacturing cost department A, B, C total. The cost of producing a particular order was determined as below. ये specific order. This was for total level and this is for particular order. Material, labor and indirect manufacturing cost. Total cost is 2,200. Now what the general manager has a hazy idea that job executed on orders of this nature are underpriced. What he is saying this 2,200 is underpriced. He is saying that there is something wrong in this 2,200 cost which has been derived, which is not the correct. So service of the firm of cost accountant of which you are a member have been acquired for thorough investigation. Can you identify, after careful analyzing limited available information, the fundamental flaw in the company's method of assuming direct labor cost is an acceptable basis for distributing indirect labor? So direct labor cost is an acceptable basis. Prepare revised cost sheet. Okay, revised cost sheet with your suggestions. Okay, so read the question once, then we will solve it. Read the question carefully. एक बार read कर लो. Page number है 307. New book, old book है 305 I think so. ठीक है. Let's start now. Let's start. Statement of cost in the books of company. Statement of cost for specific job. Specific job है ना ये? Particulars. Amount rupees. चलो one by one. Now how much is the direct material for this specific job? Direct material is 1,000. Direct material 1,000 rupees. Direct wages. Department A, B and C. Department A, Department B and Department C. Directly they have given amount. How much? 120, 280 and last one is 200. So this material labor cost will go outer side 600. Clear? So this will become prime cost. This will become prime cost. So how much is the prime cost? Prime cost is 1,600. 1,600. Add factory overhead. Now how much factory overheads they have given? They have directly given indirect manufacturing cost 600. Now this is the flaw over here. What they are saying, कि
labor hour rate नहीं, overheads to the recovery of direct labor cost is okay with them. Now how much is the direct labor cost? 90,000. How much is indirect manufacturing cost? 90,000. So directly they have taken 100%. So indirect manufacturing cost 100% ले लिया, ठीक है? Just for your understanding, what they have applied, and we have to find out that flow itself. So they have find out factory overhead as a percentage of direct wages. Don't write anything. This is only for understanding purpose. Factory overhead as a percentage of direct wages. So what will be the formula? Factory overheads divided by direct wages multiplied by 100. This will be the formula. Right. Now with this formula at total level, what they did at total level, they have taken what? Direct labor as 90,000. Factory overheads 90,000. Direct overheads, direct labor 90,000 multiplied by 100. So कितना परसेंटेज आता है उसका? 100%, right? So percentage at percentage level it is coming to 100%. Now what they had done here? Wages का 100%. ये wages है, उसका 100% ले लिया. And they derived the total cost. This is what they have derived, right? 22 रुपये ऐसा है ना उनका. But is this correct? We have to find out overhead recovery rate at departmental level. So now computation working note number 1 लिखो अभी. Computation of department overhead recovery rate on the basis of direct wages. On the basis of direct wages. So formula बनेगा अपना, formula बनेगा factory overheads as a percentage of direct wages. So formula है factory overheads divided by direct wages into 100. So तीनों डिपार्टमेंट्स का करना है. डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी. डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी. A, B and C. They have applied total level. So total level का गलत गया है, इसलिए तुमको. So direct wages कितना है? Direct नहीं, factory overheads. In the factory overheads. Indirect कितना है factory overheads? Indirect manufacturing cost. Indirect manufacturing cost is nothing but factory overheads. 20,000, बराबर? इसका 40,000, 30,000, 40,000 and 30,000. Agreed? Direct wages कितना है? Direct wages 40, 20 and 30. See, direct labor 40, 20 and 30. 40,000, 20,000 and 30,000. So factory overheads as a percentage of डायरेक्ट वेजेस इज इक्वल टू कितना आएगा इसका? फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस मल्टीप्लाइड बाय 100. कितना परसेंट आता है? 50%. दिस डिपार्टमेंट फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय वेजेस इनटू 100, 200%. एंड दिस वन इज विल बी 100%. बराबर? सो डिपार्टमेंट लेवल पे अलग अलग ओवरहेड्स आता है, अलग अलग परसेंटेज आ गए, ठीक है. नाउ ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स. सो 3 डिपार्टमेंट है, ए, बी, सी. एग्रीड? ए का कितना है? 50%. 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. नाउ ए का डायरेक्ट वेजेस कितना है? 120. 50% ऑफ 120 60 रुपीज. दूसरे का कितना है? 200%. 200% ऑफ डिपार्टमेंट बी कितना है वेजेस? 280. सो 280 इंटू 200%. एंड लास्ट डिपार्टमेंट सी कितना है? 100% ऑफ 200. 100% ऑफ 200. So 200 into 100%.
सो कितना आता है, ओवरहेड्स इज कमिंग टू 820. उसका कितना आया था, 600. टोटल लेवल पे लिया तो 100% आ रहा था, बट एट वी गो डिपार्टमेंटल लेवल, सो टोटल कॉस्ट, दिस कम्स टू टोटल कॉस्ट. सो कितने से अंडर प्राइस था, 2420. उसका कॉस्ट कितना था, 2200 ही था ना, हाँ. सो हाउ मच, ये कंपनी का ऐसे अकाउंटेंट रहेगा तो कंपनी का दिवाला निकलने में टाइम नहीं लगेगा. कुछ गलत किया था उसने, ये टेकन एट ब्लैंकेट रेट, सब मिला के एक रेट ले लिया, विच वॉज करेक्ट. कैसे करेक्ट था, एक लॉजिक से करेक्ट ने, मतलब एक लॉजिक से देखा जाएगा तो सेम ही है. परसेंटेज है, टोटल लेवल पे परसेंटेज निकालने जाएगा तो 100% ही आएगा, बट टोटल लेवल पे फिर 600 का, यहाँ पे ओवरहेड 600 ही आता है. बट वी गो बाय डिपार्टमेंट ओवरहेड रिकवरी रेट, ओवरहेड इज कमिंग टू 820. So what general manager is saying is correct. This 2200 is underpriced. So what should be the correct price, 2420. Done? Pakka? No question? Online friends, any query? Online friends, any query? No, sir. Now screen is visible? Yes, sir. Okay, good. Chalo. Next illustration number 5. A shop floor supervisor of a small factory presented the following cost for job number 555 to determine selling price. Material, direct wages 18 hours at the rate 2.5, 45 rupees. Now this 18 hours is categorized into department X, Y, Z. 8, 6, 4, 18 hours. 18 hours into 2.5, 45 rupees आ गया, ठीक है. Chargeable expenses, special item है, direct expenses 5 rupees. Prime cost 120. Add 33 and 1/3% expenses 40 rupees 160. I believe same problem हमने किया है. पहला problem same था. Analysis of profit and loss account for 22 shows the following. So last year का profit and loss account इस तरीके से बताता है, material, wages, stores, overheads, selling expenses, sales पूरा दिया है. Calculate recovery rate. It is noted that average rate of 3 departments are similar. Enter revised cost for 22, add 20% on the selling price. So simple है. So पहले base period जो है इसका statement of cost करेंगे. Base period का statement of cost करेंगे. Then we will go for statement of cost for this job number 555. Okay, done? पक्का? ठीक. चलो शुरू करते हैं. In the books of statement of cost for base period, आपको समझ में आ रहा है ना अभी? Who is not understanding, डेटा कहाँ से ले रहे हैं, कुछ परसेंटेज, एक बेस पीरियड का परसेंटेज, रेट, लेबर ओवरहेड रेट ले रहे और करंट जॉब का स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कर रहे. पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, particulars amount rupees. Should we start now? Things are simple. Material 1,50,000. Material 1,50,000. Direct wages डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड है ना, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड. कितना है अमाउंट? बस अगर मेरा स्पीड बढ़ रहा है तो बोल देना, क्योंकि अभी और मेरे स्पीड के साथ अगर मैच नहीं हो रहा, इट मीन्स लिटिल बिट स्लो है. आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाओ आपका भी, बट स्टिल अगर थोड़ा मेरा स्पीड होता है तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी. 10, 12, 8, 10, 12,
8,000. So this will give us direct wages. Special stores item, it is direct expenses. Special direct expenses, that is special stores item. कितना है? 4,000 ना? हाँ या ना? आप डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं आप खुद लोग? प्राइम कॉस्ट, दिस विल गिव अस प्राइम कॉस्ट. 1,84,000 is the prime cost. Done? Till here, any question? Add factory overheads. Add factory overheads. कितना factory overheads? Department XYZ. Department XYZ. 592,000. 592,000. This will become our works cost. ऑफिस ओवरहेड्स है कुछ? ऑफिस ओवरहेड्स है क्या कुछ? ऑफिस ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स. तो हम लोग प्रिपरेशन ऐसे करेंगे कि हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, cost of production is how much? 2 lakhs. Add selling expenses ना, selling and distribution कितना है? selling and distribution expenses, selling expenses, see department ये ले लिया, works cost ले लिया, selling expenses 20,000. this will become total cost. Total cost. How much is total cost? 2,20,000. Profit and sales. Sales कितना दिए हैं? 2,50,000. Credit side 2,50,000 is sales. So how much is profit? 30,000 is the profit. ठीक है. So base period का statement of cost पूछा गया नहीं पूछा गया सॉल्व करेंगे. 2 मिनट लगते हैं. विल बी एबल टू डू इट वेरी फास्ट बिकॉज कैलकुलेट डिपार्टमेंट ओवरहेड रिकवरी रेट, इसमें इसके लिए हमको लगेगा पक्का. ठीक है. नाउ फॉर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 555. स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 555. Statement of cost for job number 555. चलो. Should we start? What is material? 70 rupees. Direct wages. Direct wages now. Department X, 8 hours at rate 2.5. 8 hours at rate rupees 2.5 per hour. बराबर? कितना होता है? 8 into 2.5, 20 रुपये. डिपार्टमेंट Y कितना है? डिपार्टमेंट Y 6 hours. So 6 hours into 2.5. डिपार्टमेंट Z कितना है? 4 hours. 4 hours into 2.5, 10 rupees.
So total amount direct wages is 45 rupees, right? स्पेशल आइटम दिया है, चार्जेबल आइटम 5 रुपये, इधर भी है 4000, यहाँ पे भी 5 रुपये. So our prime cost is coming to 120 rupees. Prime cost is coming to 120 rupees. 5 rupees कैसे है सर? Sorry? How did we get 5 rupees? How we found out 5 rupees? यहाँ पे दिया है ना, चार्जेबल एक्सपेंसेस स्पेशल स्टोर्स आइटम 5 रुपये, क्वेश्चन में ही है. Okay. ठीक है. Now we have to find out how much is the overheads. So working note number 1. Working note number 1, computation of overhead recovery rate basis labor hour rate method. लेबर आर रेट मेथड से. ठीक है. पर्टिकुलर्स कितने डिपार्टमेंट है? एक्स वाई जेड ना, एक्स वाई एंड जेड. बेस पीरियड वेजेस कितना है? बेस पीरियड वेजेस, बेस पीरियड वेजेस कितना है? बेस पीरियड वेजेस 10, 12 and 8000. 10,000, 12,000, 8,000. रेट पर आर, वेज रेट पर आर, वेज रेट पर आर कितना? 2.5 ना, यहाँ पे दिया है देखो. वेज रेट पर आर इज हाउ मच? 2.5. 2.5 and it is common to all. Number of labor hours, number of labor hours. So कैसे करेंगे? डायरेक्टली डिराइव भी कर सकते हैं. फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर अमाउंट पेड इज हाउ मच? 2.5. अमाउंट अगर 10,000 रुपया है तो हाउ मच आवर्स हैज बीन वर्कड? सी फॉर 1 आवर रेट इज हाउ मच? 2.5. एग्रीड फॉर दिस. 1 घंटे के लिए 2.5 रुपये है और उसको पेमेंट कितना दिया है? बेस वेज पीरियड, बेस पीरियड रुपीज में कितना दिया है? रुपीज में 20,000 रुपया, 10,000 रुपीज. सो हाउ मच विल बी द आवर्स? सो 10,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2.5 कितना है? 4,000. 4,000 आवर्स. यहाँ पे 4,800 आवर्स एंड यहाँ पे 3,200. दीज आर इन आवर्स. एग्रीड? यस और नो? पक्का? फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर बेस पीरियड कितना? फैक्ट्री ओवरहेड फॉर बेस पीरियड, फैक्ट्री ओवरहेड्स 5, 9 एंड 2,000. 5,000, 9,000 and 2,000. Factory overheads per labor hour. फैक्ट्री ओवरहेड्स पर लेबर. फॉर्मूला क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर आवर्स. So how much is factory overheads? 5,000 divided by number of labor hours 4,000. 1.25. बराबर? हाँ या ना? लास्ट टाइम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किया ना हमने, सेम कुछ नहीं, फिगर से बदले. यहाँ पे 9,000 डिवाइडेड बाय 1.875 एंड लास्ट 2,000 डिवाइडेड बाय 3,200, 0.625. एग्रीड? पक्का? ठीक है. नाउ कमिंग टू दिस फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स डिपार्टमेंट एक्स वाई एंड जेड कितना रेट है? डिपार्टमेंट एक्स 8 आवर्स इंटू 1.25. कहाँ से लिया 1.25? फ्रॉम ईयर. दिस रेट्स विल बी टेकन फॉर ओवरहेड. 6 आवर्स इंटू
1.875, and last one 4 hours into 0.625, 8 into 6 into, and last 4 into. Agreed? Any question till here? किसी को कोई क्वेश्चन? पक्का? वन पॉइंट, हाँ, वेजेस किती आहे? 10,000. 10,000 रुपये त्याला पेमेंट केलेत ह्या डिपार्टमेंटमध्ये. रेट पर आवर किती आहे? 2. किती तास काम केलं असेल त्यांनी? 1 तासाचे 2.5 रुपये. त्यांना 10,000 रुपये मिळाले असेल तर किती तास काम केलं असेल? 1 तासाचे 2.5 रुपये. Then they have received rupees 10,000. So how much hours they have worked? Cross multiplication. 10,000 into 1 divided by 2.5. So कितने घंटे काम किया उसने? 4,000. Similarly यहाँ पे भी है. Similarly यहाँ पे भी है. So they have worked for those. This department has worked for 4,000 hours. This has worked for 4,800. This has worked for 3,200 hours. Agreed? Now, how much is the factory overheads given in base period? 592,000. So factory overhead per labor hour कितना आएगा? Factory overhead divided by number of labor hours. Now that has to be applied over here. कितने घंटे काम किया? 8, 6, 4 for this job. Rate कौन सा है? 1.25, 1.87, 0.625. Done. So we will get works cost 143 rupees 75 paisa. There is no admin overheads, so cost of production is 143.75. Selling and distribution overheads करना है. Working note number 2. Computation of selling overheads as a percentage of cost of production. What will be the formula? Selling overheads divided by cost of production multiplied by 100. Selling overheads divided by cost of production multiplied by 100. So how much is selling overheads base period में? Base period में कितना है? 20,000. So selling overheads in base period is 20,000. Divided by cost of production 2 lakhs into 100. कितना परसेंट बनता है? हाँ, 10%. So selling and distribution overheads कितना आएगा? 10% of cost of production. Cost of production कितना है? 143.75. So cost of production का 10%. So we'll get total cost 158.125. Done? Pakka? Okay. Now what they are saying, profit कितना apply करना है? 20% profit to total cost to determine the selling price. So it's a very simple. Total cost पे profit कितना है? 20% of total cost. So 158.125 into 20%. We'll get the selling price. We'll get the selling price. Should we move to next illustration? ये सॉल्व करना है, आप लोगों को देखना है तो देख लीजिए.
Online friends, any query? Understood, sir. चलो, let's go to the next illustration. कुछ आंसर अलग आया इनका? नहीं. Illustration number 6. होमवर्क के लिए कुछ बचेगा कि नहीं? एक आधा टॉपिक लास्ट है क्या ये? आपने कल भी कुछ होमवर्क नहीं किया था. चलो इसको सॉल्व करते हैं. हाँ, कल किया था सर. कल कर लिया था क्या? हाँ सर, कर एक होमवर्क के लिए दिया था आपने. हाँ, हाँ. इलस्ट्रेशन 4th. ओके. ठीक है. Should we start then this one? Last day, job cost sheet का? We have time. In a factory, following the job costing method, an abstract from work in process as on 30th September was prepared as under. So job number 115, 118, 120, material, labor, factory overheads. So these were for the month of September. Now only the यहाँ पे simple thing है. Only thing is that one job is continued in 2 months. सितंबर का दिया है ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन, आगे दिया है अक्टूबर का इंफॉर्मेशन. सो वी हैव टू जस्ट क्लब सितंबर एंड अक्टूबर पुट टुगेदर एंड डिटरमाइन द कॉस्ट. सिंपल है. सो मटेरियल रिक्विजिशन नंबर, जॉब नंबर एंड अमाउंट, कॉस्ट अमाउंट्स. इतना मटेरियल इशू कर दिया है मल्टीपल जॉब्स के लिए. अ समरी ऑफ लेबर आवर्स डिप्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड हैज आल्सो बीन गिवन. जॉब नंबर पे कौन से दिए है. ठीक है. अ शॉप क्रेडिट स्लिप was issued in October. That material issued under requisition number 54 was returned back to stores as being not suitable. The material transfer note issued in October indicated that material issued under requisition number 55 job 118 was directed to job number 124. ठीक है. The hourly rate of shop A is 3 while shop B is 2. The factory overhead is applied at the same rate in September job 115, 118 and 120. You are required to compute the factory cost of completed job of this month. It is practice of management to put 10% factory cost over administration selling invoice job. Total cost plus 20%. What would be the invoice price of these three jobs? 115, 118 and 120. चलो, read the question. एक बार read कर लो. Read the question carefully. कौन से जॉब का करना है? 115, 118 एंड 120. चलो, इन द बुक्स ऑफ कंपनी जॉब स्टेटमेंट ऑफ जॉब कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट. फॉर जॉब नंबर 115 बराबर है, 118 एंड 120. जॉब
number 115, job number 118, and job number 120. Cost of September month brought down. बरोबर ना? Cost of September month brought down. So September month का job number 115, material कितना है? Material cost 1325, 118 का 810 and job number 120 का 765. कनेक्टिव्हिटीचा प्रॉब्लेमच आहे सर. मागच्या वेळेस तर खूपच हंगामा केला होता. आज पण मी स्पीड टेस्ट केली आहे तर खूप कमी होतं पुअर. मी मॅडमला फोटो पाठवला होता जस्ट. आता रनिंग घेतलेलंच आहे 21.9 and 24.3. हां नाही ठीक आहे. म्हणजे माय ओनली कंटेन्शन इज दॅट हां early the better because we have now entered into heart of the costing. ठीक है नहीं but this will impact recorded lectures also na. Connectivity issue will impact recorded lecture also. There will be a voice issue or something that kind of issue. No, whatever it may be. ठीक आहे ओके. नाही नो प्रॉब्लेम. फक्त लवकर करा. आफ्टर मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट लेबर. Direct labor. How much is direct labor? 400 hours at rupees 800. So 800 rupees यहाँ पे 500 rupees यहाँ पे 475 rupees. Next, factory overheads. So here should we take prime cost? नहीं ज़रूरत नहीं because we have to make continuity. Total cost लेके next month का लेना है. No, don't make prime cost here in this statement. किया तो आप ही कॉम्प्लिकेशंस में चले जाओगे. ठीक है. फैक्ट्री ओवरहेड्स सर सॉरी टू इंटरप्ट पण आपण प्रोसेस काय करणार आहे सर? सॉरी सर सॉरी टू इंटरप्ट पण आपण प्रोसेस काय फॉलो करणार आहे आता? प्रोसेस काय फॉलो करणार आहे म्हणजे या सम साठी तुम्ही म्हणालात की प्राइम कॉस्ट नाही घ्यायची मग म्हणजे आपण स्टेप्स काय आहेत आपल्या? नॉट एन इश्यू. Prime cost. So how the life will be miserable, let's understand that. So this is prime cost. कुछ चेंज नहीं करना है प्रोसेस में. फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स. कितना फैक्ट्री ओवरहेड्स? 640, 400 and 380. This will become total cost. बराबर. बाकी कुछ दिया नहीं उन्होंने. This plus this. Agreed? सितंबर का टोटल कॉस्ट आ गया. टोटल कॉस्ट ऑफ सितंबर. Now add cost of October. Cost of October 24. एड कॉस्ट ऑफ अक्टूबर. नाउ अक्टूबर में क्या क्या खर्चा हुआ है? मटेरियल कॉस्ट. फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट. नाउ हाउ मच इज मटेरियल? जॉब नंबर 118 कितना है? 300. हम लोग जॉब नंबर 118 कर रहे हैं 300. मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 50 उसमें कुछ एडजस्टमेंट है क्या? A shop credit slip was issued in October. That material issued under requisition number 54 was
return back to stores being not suitable. So what has happened? Requisition number 54, don't write it. कितना है? जॉब नंबर 118 कितना? 300. अगर हम लोग लेते तो 300 यहाँ पे लिख लेते. लेस रिटर्न टू स्टोर्स कितना है? 300. खत्म. मतलब मटेरियल कितना कंज्यूम हो गया? 0. कुछ नो इम्पैक्ट. एग्रीड? सो पहला जो एलिमेंट है जॉब नंबर 118 के लिए 300 मटेरियल रुपीस दिया था वो इशू हुआ ही नहीं है. ठीक है. सो नो नीड टू राइट ओवर हियर. अंडरस्टूड? दूसरा रिक्विजिशन नंबर 55 अगेन जॉब नंबर 118 है कितना? 425. उसमें कुछ एडजस्टमेंट है. so ये पहला एडजस्टमेंट समझ में आया कि नहीं? मटेरियल इशू किया था बट फिर से रिटर्न दे दिया. तो वाई टू राइट दैट मटेरियल कॉस्ट? एग्रीड ना? तुम्हाला मी 100 रुपये दिले आणि परत मागितले मी. तुमच्याकडे किती राहिले? 0. सिंपल. तो यहाँ पे कुछ खाया ही नहीं तो क्यों लिखने का? ओके. आफ्टर रिक्विजिशन नंबर 55 425 रुपीज उसका कुछ एडजस्टमेंट है? A material transfer note issued in October indicated material issued under requisition number 55 was directed to job number 124. So क्या हो गया? यहाँ पे फिर से मटेरियल कितना दिया था? How much material was given? 425. Again less directed to job number 24. 124 ना? 124 जो अपने इधर है ही नहीं -425 कर देते और इसमें 125 रहता है तो इधर 124 में ऐड कर दे. बट तो हुआ ही नहीं. सो वाई टू राइट दिस अगेन? नो नीड टू राइट स्टोरीज. क्लियर? सो बोथ द रिक्विजिशन इशू किया रिटर्न कर दिया. अभी इनको फॉर एग्जांपल मैंने इसको 100 रुपये दिए और या इसको बोला तू उसको दे दे. इसके पास कितना रह गया? नथिंग. एग्री? ओके. नेक्स्ट रिक्विजिशन नंबर 56 1 सॉरी रिपीट करा ना हे. रिपीट करायचं. ओके. मटेरियल कॉस्ट रिक्विजिशन नंबर कितना है? 54 ना? कितना है? अमाउंट 300 रुपीज लेस रिटर्न बैक कितना? -300. खत्म हो गया. पहले इशू किया फिर रिटर्न कर दिया. हो गया 0. अगेन रिक्विजिशन नंबर 55 कितना है? 425 लेस डाइवर्टेड ना लेस डाइवर्टेड टू जॉब नंबर 124 कितना? -425. ठीक है. ओके. तो अब तक कितना हुआ है यहाँ पे मटेरियल इशू? 0 जॉब नंबर 118 पे. आफ्टर दैट 56 कितना है? 515. उसका कुछ एडजस्टमेंट है? नहीं है ना? सो रिक्विजिशन नंबर 56 मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 56 कितना है? 515. ठीक है. आफ्टर दैट जॉब 120 का कितना है? 665. कुछ इशू किया है वहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट है? 665 का कुछ एडजस्टमेंट है? नहीं ना? ठीक है. सो मटेरियल रिक्विजिशन नंबर कितना है ये? 57 ना? 665 बराबर. मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 665 यहाँ पे. मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 57 जॉब नंबर 120 के पास नीचे आएगा 665. आफ्टर रिक्विजिशन नंबर 58 जॉब नंबर 121 है जो हम लोग कर नहीं रहे. आफ्टर दैट 59 है जॉब नंबर 124 जो हम लोग कर नहीं रहे. सो मटेरियल की कॉस्ट इतना ही है. ओके. लेबर कॉस्ट डायरेक्ट लेबर now how much is the direct labor? So direct labor there are shop A and shop B 115 118 and 120 यही 3 कर रहे हैं ना हम लोग. So shop A
सर शॉप 115 ला मटेरियलच इश्यू नाही झालाय बट सर त्यांचे लेबर चार्जेस आहेत असं हां कसं काय सर? असंच असं थोडे असतं म्हणजे जॉब इथे ऑक्टोबर सप्टेंबरमध्ये सगळं काम उरकून गेलं असेल मटेरियलचं तर काय गरज आहे तिथे परत मटेरियल ॲड करायची. पण सर लेबर चार्जेस आहेत ना. सुकन्या प्रोसेस कॉस्टिंग किया ना हमने लास्ट टाइम. यस सर. तो एक प्रोसेस में अगर पूरा मटेरियल इशू हो चुका रहेगा दूसरे प्रोसेस में ओनली लेबर कॉस्ट रहेगा. यस सर अंडरस्टूड ओके. सो ये जनवरी महीने सितंबर महीने में ये पूरा मटेरियल इशू कर दिया इस पे काम हो चुका है. अभी ओनली फर्दर प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर. नॉट पॉसिबल. यस सर पॉसिबल. हाँ तो ओके गुड. सो शॉप नंबर ए एंड शॉप नंबर बी. ठीक है. शॉप नंबर ए का रेट क्या है? एट द रेट ₹3 पर आवर है ना, बराबर ना, यहाँ पे दिया है. द आवरली रेट इन शॉप इज ₹3 पर आवर वाइल द शॉप इज ₹2 पर आवर. एट द रेट ₹2 पर आवर. ठीक है. नाउ लेट्स सी हाउ मच टाइम दे आर स्पेंडिंग. जॉब नंबर 115 हम लोग पहले कौन सा कर रहे हैं? जॉब नंबर 115. जॉब नंबर 115 कितना है? 25 आवर्स इन शॉप ए एंड 25 आवर्स इन शॉप बी. तो कितना कॉस्ट आएगा यहाँ पे? 25 आवर्स इनटू कितना है? ₹3 ना. और यहाँ पे 25 आवर्स इंटू 2. 25 इंटू 2. डन. पक्का. दो अलग अलग शॉप का अलग अलग निकाला है. डायरेक्टली भी ऐड कर सकते थे. 75 दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस. गॉट इट एवरीबडी. ये परत एक्सप्लेन करो ना. ठीक है. ये बघा व्हाट इज हैपनिंग मॉड्यूल में कैसे एक्सप्लेन किया है वो भी देख लेते हैं. सो आपको अगर आसानी लग रही है. लेबर कॉस्ट देखो 25 आवर्स इंटू शॉप ए में कितना 3 घंटे, रेट इज ₹3. और शॉप बी में कितना काम कर रहा है? 25 आवर्स, रेट इज ₹2. ठीक है. देखो शॉप ए में कितना घंटे काम कर रहा है वो? 25 आवर्स इंटू ₹3 पर आवर है, ₹75 हो गए. क्वेश्चन में दिया है नहीं यहाँ पे 25 और 25 है कि नहीं? 25 आवर्स एंड 25 आवर्स. सो 25 आवर्स, चलो मैं बाद में लिखता हूँ इसको. यहाँ पे कितने घंटे काम किया? 25 घंटे काम किया. एग्रीड. इसका रेट कितना है? ₹3. इसका रेट कितना है? खत्म. जॉब नंबर 118 पे 90 एंड 30, 90 आवर्स एंड 30 आवर्स. एग्रीड. हाँ नहीं ये आवर्स हो, पहले आवर्स लिख लिया. इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है. इंटू 3 इंटू 2. डन. और इस पे कितना काम किया? 75 10, 75 10 ये आवर्स में हो गया. तो इंटू 3 इंटू 2 हो गया लेबर कॉस्ट. पक्का. डन. ओके. लेबर कॉस्ट भी हो गया. द फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एज द सेम रेट ऑफ सितंबर. ओके. नाउ फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बाकी है. फैक्ट्री ओवरहेड्स सेम रेट ऑफ सितंबर है. नाउ सितंबर में फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है? सेम रेट ऑफ सितंबर. फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द सेम रेट ऑफ सितंबर जॉब नंबर एज इट वाज डन फॉर अक्टूबर. वी आर कंप्लीटेड इन जॉब्स. ठीक है. सो वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ factory overhead recovery rate as a percentage of direct wages.
for September as a base. For September as a base. फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है? फैक्ट्री ओवरहेड्स. डायरेक्ट वेजेस कितना है? फैक्ट्री ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. क्या फॉर्मूला बनेगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस multiplied by 100. Factory overheads divided by direct wages into 100. कितना परसेंट है? 80%. एग्रीड? 80%. तीनों भी 80% में ही जा रहे हैं. नहीं समझ में आया? Who has not understood? Please be very frank. कुछ कर नहीं रहे हम लोग. ब्लैक मैजिक नहीं है यहाँ पे कुछ भी. बेस पीरियड का इंफॉर्मेशन लेना है, नेक्स्ट पीरियड के लिए अप्लाई करना है, परसेंटेज लेके करना है. ना तो ये फिगर्स आप लोग बोलते हो कैसे भी कुछ भी निकल के आता है. नथिंग लाइक दैट. किसको लग रहा है कि ये फिगर्स ब्लैक मैजिक जैसे निकल रहे हैं? नहीं ना? ठीक है. फैक्ट्री ओवरहेड्स परसेंट कितना है? 80% ऑफ, नहीं डायरेक्टली लिख सकते हैं, सबके लिए सेम है ना. 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. सो डायरेक्ट वेजेस कितना है? दिस प्लस दिस. बराबर बराबर ना? इसका 80%. एग्रीड और नॉट? डायरेक्ट वेजेस इस कितना है? ये दोनों मिलकर डायरेक्ट वेजेस है ना. शॉप ए शॉप बी, उसका 80%. दिस विल गिव अस. और कुछ बाकी है क्या? It is practice of the management to put a 10% of factory cost to recover administration. ठीक है, पहले तो टोटल कॉस्ट निकालेंगे. टोटल कॉस्ट ऑफ, ये फैक्ट्री कॉस्ट फॉर फैक्ट्री ओवरहेड है. टोटल कॉस्ट ऑफ अक्टूबर ना, अक्टूबर का टोटल कॉस्ट आएगा कितना है इसका? अक्टूबर का टोटल कॉस्ट बराबर ना? कुछ गलती कर रहे हैं? October. Now this we will get total cost. Total cost, that is September plus October. So September का कितना था? 2765 plus October. ठीक है, एक बार फिर से देख लो हमने क्या किया है. वी हैव नॉट डन एनीथिंग विच इज यू थिंक इज समथिंग वेरी डिफरेंट. क्लियर? पक्का? ऑनलाइन फ्रेंड्स, ऑनलाइन फ्रेंड्स क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. नाउ टू दिस, नाउ दिस हैज बिकम आवर टोटल कॉस्ट. नाउ टू दिस व्हाट वी विल ऐड, यहाँ पे दिया है देखो. यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड जॉब फॉर बोथ द मंथ्स. इट इज प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट टू पुट 10% फैक्ट्री कॉस्ट एज एडमिनिस्ट्रेशन and selling and distribution overheads. So add selling and distribution, admin selling and distribution overhead, admin selling, total factory cost लिखो, total cost नहीं, total factory cost. Add admin selling and distribution overheads. कितना है? 10% of factory cost.
फैक्ट्री कॉस्ट कितना है 2990, इसका 10%. झालं तुमचं सॉल्व झालं. डन. काय म्हटलं का कोण म्हटलं लिहून टाकलं. एव्हरीबडी इज सॉल्विंग आणि तुम्ही पुढे बसून असं गडबड करतात. ऍड ऍडमिन अँड सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्यूशन ओव्हरहेड्स. सो दिस विल गेट टोटल कॉस्ट. बरोबर. और कुछ है क्या. कॉस्ट प्लस 20% है. दिस विल बिकम टोटल कॉस्ट. Agreed? This will become total cost and to this add profit. Profit कितना है 20% of total cost है ना. 20% of cost, total cost. So 2890 into 20%. This will give sales. Any question? Online friends, any question over here? No, sir. Understood, sir. चलो next illustration. So first method of costing we complete. First method of costing we completed today. अपने कितने 5-6 methods of costing करना है ना. Next method of costing is batch costing. Now what we have studied, one specific job. उस स्पेसिफिक जॉब का अगर कॉस्ट करना है तो वी हैव यूज्ड जॉब कॉस्टिंग मेथड एंड वी नो इट्स इक्वल टू कॉस्ट शीट, हाउ टू डिराइव इट, एंड वी आर एक्सपर्ट इनटू दैट नाउ. Now batch costing. Now where the batch costing is used? Basically in pharmaceutical industries, chemical industries, where the productions are made in batches. Pharmaceutical industry में ऐसा नहीं कि चलो एक गोली बनाया खांसी का, दूसरा बनाया पैरासेटामोल, तीसरा बनाया, ऐसे बनाते हैं क्या? नहीं. So 1000 गोली का एक बैच निकालेंगे which will be of cough, 1000 गोली ऑफ पैरासेटामोल. इस तरीके से दे विल मैन्युफैक्चर द, या बॉटल्स, मेडिसिन का भी बॉटल्स भी रहता है. सो इन दोज इंडस्ट्रीज वेयर द प्रोडक्शंस आर इन बैचेस, which method of costing to be used is batch costing. कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, कुछ नथिंग. अभी एक जॉब के लिए हमने एक मेथड, वही जॉब अगर हमको 10 में बोलने करने के लिए तो सेम तरीका करना है. बैच और जॉब कॉस्टिंग में कोई फर्क नहीं है. जॉब कॉस्टिंग इज ओनली फॉर वन जॉब एंड बैच कॉस्टिंग इज फॉर वन बैच. जॉब विल बी वन, batch will be one batch which will contain thousands or hundreds or multiple jobs. Understood? So job costing में एक जॉब देखा था, बैच कॉस्टिंग में एक बैच देखा जाएगा. एक बैच में मल्टीपल जॉब हो सकते हैं. जॉब का मतलब वो गोली, फॉर एग्जाम्पल पैरासेटामोल का एक गोली, दैट इज द जॉब. कुछ ज्यादा अलग सा कुछ सोचना नहीं, दिमाग नहीं लगाना है. ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड ओवर हियर इज डिटर्मिनेशन ऑफ बैच साइज. कितना बैच का, कितने क्वांटिटी का एक बैच बनाना है. दैट डेरिवेशन इज व्हाट वी विल हैव टू अप्लाई सम लॉजिक. अदरवाइज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट. नाउ टेल मी, इफ वी हैव प्रिपेयर्ड दिस स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जॉब नंबर 115, तो अगर मैं बोलूं बैच नंबर 115, क्या फर्क पड़ने वाला है? Batch number 120, and in each batch contains how many? Batch size
बैच साइज ऑफ प्रोडक्शन, मानो यहाँ पे 100 यूनिट्स, यहाँ पे 120 यूनिट्स एंड यहाँ पे 300 यूनिट्स. दैट्स इट, दैट्स इट. सो हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट निकाला. ये टोटल एक बैच का कॉस्ट है, पर यूनिट का निकालना है तो 100, 120 एंड 300. दैट्स इट. सिंपल, एज सिंपल है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें. एक जॉब का था, एक बैच का है. बैच में है वो मल्टीपल. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस जॉब कॉस्ट, बैच कॉस्टिंग, व्हाट शुड बी दिस बैच साइज. एक बैच में कौन डिसाइड करेगा एक बैच में 100 यूनिट बनाना है या पैरासिटामोल का गोली बनाना है, एक बैच में 1000 का. हु डिसाइड्स दैट? हाँ, प्रोडक्शन वाले असे डोकं नाही लावत. त्यांना सांगितलं प्रोडक्शन करायचं. Who decides that? There is one formula which you people have studied also. कौन सा फॉर्मूला एक स्टडी किया था? परचेस करने के लिए हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था. मटेरियल परचेस करने के लिए एक फॉर्मूला स्टडी किया था. कितने बैच में कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल शुड बी परचेस वन टाइम. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. In the same way, in batch costing, we will study economic batch size. Same है, formula is same. चलो. So कहाँ पे यूज होता है, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे हम लोग. इकोनॉमिक बैच साइज और इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी. बेसिस दिस इकोनॉमिक बैच साइज और इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, वी विल बी एबल टू फाइंड आउट ये बैच साइज कितना होना चाहिए. दैट्स इट. बाकी एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. नाउ हाउ टू डिराइव इकोनॉमिक बैच साइज, दैट वी विल अंडरस्टैंड. बिफोर दैट एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये इलिस्ट्रेशन अंडरस्टैंड करते, नो नीड टू सॉल्व इन द प्रॉब्लम. इसको इलिस्ट्रेशन को जस्ट वी विल अंडरस्टैंड इट. आपके लिए अभी एकदम आसान सा चीज है ये इलिस्ट्रेशन. ठीक है. इप्टोम पेन इंडस्ट्रीज एंड हैज द फॉलोइंग बजटेड ओवरहेड्स फॉर द ईयर. कितना है, दोनों डिपार्टमेंट है, वेल्डिंग एंड असेंबली. ओवरहेड्स कितना है, 12,000 एंड 20,000. आवर्स कितने हैं, 3,000 एंड 2,000. Selling and administrative overhead 25% of factory costs. An order for 500 Brazils made at batch 38 incurred for the following cost. Material, labor 200, 400 hours, 5, 10 per hours. 1,000 was paid for the hire of X-ray equipment for testing of the weld. Required to calculate the batch size cost per unit of batch size number 38. ठीक है. सिंपल चीज है, एकदम सिंपल तरीका है. देखो अभी मटेरियल कितना है, ये बैच साइज 38 का मटेरियल इज 24,000. एग्रीड. सॉल्व करना है एक्सेल में, एक्सेल में सॉल्व करना है. चलो सॉल्व कर लेते हैं. इफ यू वांट लेट्स सॉल्व इट इन एक्सेल. आता सांगितलं ना सॉल्व करायला, कर की. बैच नंबर कौन सा है, 38 ना. स्ट्रीमिंग बंद हो गया था क्या? somebody has written over here. स्ट्रीमिंग तो चालू है, स्ट्रीमिंग ऑन है. somebody has written message onto the group but streaming is on. I don't know then what has happened, I don't know. ठीक है. मटेरियल कितना है, 24,000. मटेरियल 24,000. Sir, which illustration is this? इलस्ट्रेशन नंबर नहीं है उसको, पेज नंबर है 314. ओल्ड बुक में है कि नहीं मालूम भी नहीं है क्या, ओल्ड बुक में है भी नहीं.
ठीक है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं करना चाहता था इसको, लेकिन ठीक है. ठीक आहे सर, आम्ही समजून घेतो तसंच पाहून. घ्या, समजून घ्या. चलो, मटेरियल 24,000, ॲड डायरेक्ट वेजेस, ऐड डायरेक्ट वेजेस. कितना डायरेक्ट वेजेस? वेल्डिंग एंड असेंबली का, वेल्डिंग असेंबली, वेल्डिंग एंड असेंबली. वेल्डिंग का कितना है? 200 आवर्स एट द रेट ₹5. 200 आवर्स एट द रेट ₹5. एंड असेंबली का कितना है रे? एट द रेट ₹10. सो 200 इंटू 5 और 400 इंटू 10, 5,000 रुपीज़. डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कुछ है? इक्विपमेंट परचेज चार्जेस है. इक्विपमेंट परचेज चार्जेस ऐड नहीं किया. 1,000 वॉज पेड फॉर हायर ऑफ एक्सरे इक्विपमेंट फॉर टेस्टिंग एक्यूरेसी ऑफ द व्हील. दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट हायर कितना है? 1,000 ना, 1,000. So this will become prime cost. This will become prime cost. 30,000. Add factory overheads. Add factory overheads. So factory overheads रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा अपने को. बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है, बेस पीरियड का बजटेड एक्टिविटी दिया है. सो वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट बेसिस बजटेड इनपुट. सो 3 डिपार्टमेंट है ना, 2 पर्टिकुलर्स, वेल्डिंग and assembly. Particulars, welding, assembly. फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है? किधर गए हम लोग? हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड्स 12,000, 20,000. अरे काय आज कंटाळा आला काय? बोर झाले? आवर्स, लेबर आवर्स, बजटेड लेबर आवर्स कितना है? 3,000, 2,000, 3,000, 2,000. ओके. सो पर लेबर आवर, फैक्ट्री ओवरहेड्स पर लेबर आवर 12,000 divided by 3,000. 4 rupees and 10 rupees. Got it? 4 rupees and 10 rupees is the per hour rate. So welding shop में कितना घंटे काम किया है? 200 hours at the rate ₹4 per hour. रिकवरी रेट यहाँ से ले रहा है, यहाँ पे ₹4.10 per hour. ठीक है. So 200 into 4 and this one is 400 into 10. So 4,800. This will become total cost. This will become total cost. $34,800. Now to this total cost, how much they are adding? Our factory cost. This will become factory cost. Factory cost. Add admin overhead. No admin overheads. 0. This will become COP. Cost of production. To this add selling and distribution overheads.
कितना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स? Selling and distribution overheads are 25% of factory cost. So selling and distribution overheads 25% of factory cost. So factory cost is how much? 34,800 into 25%. बराबर? So this will give us total cost. This will give us total cost. So total cost is 43,500. Any question? पक्का? So हमने जो जॉब कॉस्टिंग किया था वही कर रहे हैं हम लोग, बट एक बैच का कर रहे हैं। एक बैच में देयर विल बी मल्टीपल जॉब्स, और जॉब में एक ही जॉब रहेगा। बैच में मल्टीपल जॉब्स हो सकते हैं। एवढं कंटाळाला करे, ठीक है, डन। वी आर डन विथ टोटल कॉस्ट। नाउ कॉस्ट पर यूनिट कितने बैच, इसमें कितने यूनिट्स हैं बैच के? 500। नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ बैच, नंबर ऑफ यूनिट्स इन बैच कितना है? 500 ना। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, this is total cost per batch and this is cost per unit. So total cost per batch divided by number of 87 rupees. Done? Done? Now costing is not a problem for batch costing. We know job costing कैसे करना है, same तरीके से batch costing भी करना है. No different changes. Now only thing is that how to derive the economic batch quantity. So हमने economic batch size का study किया था, batch size नहीं, economic order quantity का. What was the formula for economic order quantity? What was the formula? Under root 2A O divided by C, where A is equal to annual demand or consumption, annual consumption, annual demand. O is equal to ordering cost per order. ये कर दिया ना तो गए काम से, ordering cost per order, and C is equal to carrying cost per unit per annum, per unit per annum है, ठीक है. Now this was economic order quantity. Now I will just change the formula from economic order quantity to economic batch quantity. Formula remains the same. Only this O will become S, 2AS divided by C, where A is equal to annual consumption, annual demand, annual consumption, कोई भी word use करो. S is equal to setup cost per setup, setup cost per setup, बराबर ना. एक setup change करने के लिए कितना खर्चा आता है, and C is equal to carrying cost per unit per annum. C is equal to carrying cost per unit per annum, ठीक है. सो जॉब चेंज करने के लिए बैच चेंज करने के लिए सेटअप चेंज करना होता है, बराबर. तो उसके लिए लगता है सेटअप कॉस्ट. हमको परचेस नहीं करना है अभी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में परचेस करते थे, इसलिए परचेसिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आता था. यहाँ पे अभी बैच चेंज कर रहे हैं, बैच चेंज करना है तो सेटअप बदलना पड़ेगा ना. यस और नो? चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो फार्मास्यूटिकल कंपनी में पैरासिटामोल का गोली बनता है, एक बैच का 1000 गोली का एक बैच बना दिया. अभी डाई कास्ट ये सब चेंज करना पड़ेगा, केमिकल भी चेंज करना पड़ेगा. अभी पैरासिटामोल गया, अभी कफ का दवाई बनाना है, तो वो यूटेंसिल सेम रखेंगे कि वो नहीं ना, दे विल चेंज इट ना.
तो वो चेंज करना, वो सेटअप चेंज करना है पूरा। और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपका बाइक है, बाइक का मडगार्ड है, दोनों मडगार्ड है, हर बाइक के साइज का मडगार्ड अलग लगेगा। सो डाइस जो रहते हैं, होंडा का, इसका बाइक का रेड कलर का है, कलर का छोड़ो, एक साइज है, तो एक साइज का 1000 मडगार्ड बना दिए, तो डाइस चेंज करना पड़ेगा दूसरा बैच बनाने के लिए, तो सेटअप चेंज लगेगा ना। यस और नो? ठीक है, तो वो ऑर्डरिंग कॉस्ट में अभी सेटअप कॉस्ट परचेज पर सेटअप है। तो देखो 2AS डिवाइडेड बाय C, where A is equal to annual demand, annual consumption, S is equal to setup cost per batch, पर सेटअप नहीं तो पर बैच, ऑब्वियसली बैच के बाद ही सेटअप चेंज होगा। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, डन। तो फॉर्मूला विलन हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे चलते हैं। होळीला जायचंय का तुला? हा, घाई झाली तुला एकदम? जायचंय? आपली होळी होईल बरं का, एक्झामिनर आपली होळी करून टाका। हा, दिवाळी झाली आता, मागच्या पिरियडला दिवाळी होती, आता होळी है। सो ये एग्जाम्पल लिया था हमने लास्ट टाइम भी। दिवाली एंजॉय करो नका, अपना दिवाला निकलेगा। सुना नहीं आप लोगों ने? अभी होली एंजॉय नहीं करने का कोई भी? हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, चलो टेक इट एज अ जोक, डोंट टेक इट सीरियसली। From the following information, calculate economic batch quantity for the company using batch costing. Annual demand 2400. Setting up cost per batch 100. Manufacturing cost per unit 200 and carrying cost per unit is 6% per annum. ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला इज इकोनॉमिक बैच साइज। सो √2 इंटू यहाँ पे एनुअल डिमांड और एनुअल कंजम्पशन व्हाट्सओएवर इट में, कितना एनुअल डिमांड दिया है उन्होंने? 2400 यूनिट्स। सेटअप कॉस्ट पर यूनिट इज हाउ मच? 100 पर सेटअप पर बैच, एंड कैरिंग कॉस्ट इज 6% ऑफ 200। 6% वहाँ पे परचेज प्राइस था, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 200 और कैरिंग कॉस्ट कितना? 6%। सो 200 इंटू 6%, दैट इज हाउ मच? 12 रुपये पर यूनिट पर एनम है। सो 2 इंटू 2400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12, $200 यूनिट्स। इकोनॉमिक बैच साइज इज 200 यूनिट्स, बराबर है? इकोनॉमिक बैच साइज इज 200 यूनिट्स। खत्म हो गया अपना बैच कॉस्टिंग भी कंप्लीटेड। कुछ नहीं बैच कॉस्टिंग में करने लायक अभी। बैच डिसाइड कर लिया, इस हिसाब से कॉस्टिंग तो करना है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जैसे ही करना है। ओनली बैच विल बी, एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया उसका, नथिंग डिफिकल्ट इनटू दिस। सो जॉब कॉस्टिंग कंप्लीटेड, बैच कॉस्टिंग कंप्लीटेड। चल नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। हाँ क्या म्हणता? नहीं ये करते ना, जितना है एक दो और करेंगे, फिर होमवर्क के लिए ले दे देंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर कॉस्टिंग किसी ने मिस किया था क्या? एनीबडी मिस्ड इकोनॉमिक ऑर्डर कॉस्टिंग? सॉरी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मटेरियल में जो हम लोग स्टडी किए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एनीबडी मिस दैट? समजलं आता हे पक्का? सेम आहे, पाहिजे असेल तर परत एक्सप्लेन करतो मी। हा प्रॉब्लेम सॉल्व करूया आपण परत एकदा। सो somebody was saying online
माय ऑनलाइन फ्रेंड्स आर टॉकिंग नाउ. चलो बोलो क्या इशू है. नहीं सर, ये इशू कुछ नहीं है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 और 10 करते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 9 and 10 हाँ वो सॉल्व करते हैं. गो घर पे करने का है, इधर करना है, सब करेंगे इधर, डोंट वरी. चलो illustration next. A customer has been ordering 90,000 special design metals columns at the rate of rupees 18,000 per order during past year. The production cost comprises 120 for material, 60 for labor and 20 for fixed overheads. It cost 1,500 to set up for one run of 18,000 columns, and inventory carrying cost is 15%. Since customer may buy at least 5,000 columns this year, the company would like to avoid making 5 different production runs. Find out the economic production run. इसमें economic production run बोलते हैं, batch बोलो, run बोलो, whatsoever it may be, नाम में क्या रखा है. So read the question. चलो लेट्स फाइंड आउट. यहाँ पे इधर ही कंप्यूट करते हैं. नाउ व्हाट इज EBQ इज इक्वल टू इकोनॉमिक बैच साइज अंडर रूट 2AS डिवाइडेड बाय C, वेयर A इज इक्वल टू एनुअल डिमांड. कितना एनुअल डिमांड? 90,000 यूनिट्स. सेटअप कॉस्ट पर सेटअप और पर बैच इज 1,500. बराबर ना. कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है? देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है, उसका 15% लेना है. 15% of cost of production. 15% of cost of production कितना है? COP. मटेरियल कितना है? मटेरियल कॉस्ट 120 रुपीज. लेबर कॉस्ट 60 एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स 20. फिक्स्ड एक्सपेंसेस. So total cost is how much? 200. So 20 to 15% of 200. That is 200 into 15%. 30. Done? पक्का? Okay. So चलो कंप्यूट करते हैं. 2 into annual demand 90,000 into 1,500 divided by 30 into 15%. बराबर ना रे? बराबर ना? डायरेक्ट 30 आहे का? सॉरी ते काढूनच ठेवलेले तसं. ठीक आहे. यूनिट्स 3,000 यूनिट्स इज द इकोनॉमिक बैच साइज. वो कितना बोल रहे हैं? 5,000. हम लोग बोल रहे 3,000 ही बनाओ. Done? Should we move ahead? Now, Rupali was saying that illustration number 9 they want to do as homework. AB Limited is committed to supply 24,000 bearings per annum to CD Limited on a steady basis. It is estimated that it costs rupees 10 paise as an inventory holding cost per bearing per month, and setup cost per run is rupees 324. So इसमें difficult क्या है? What would be the optimum run size for bearing?
What is the minimum inventory holding cost? ठीक है. Assuming that company has a policy of procuring 6,000 bearings per run, how much extra cost would be company be incurring as compared to the exactly same problem हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में भी किया है. सेम नो, अगर आप जाके चेक भी कर लोगे तो एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम है. ठीक है, बट स्टिल विल सॉल्व इट ओवर ईयर. विल सॉल्व इट ओवर ईयर. सो पहले तो हमको क्या करना है, इकोनॉमिक बैच साइज फाइंड आउट करना है. फर्स्ट वी विल हैव टू फाइंड आउट इकोनॉमिक बैच साइज. एनुअल कंजम्पशन कितना है? 24,000. सेटअप कॉस्ट पर बैच कितना है? 324. सेटअप कॉस्ट कितना है पर सेटअप है ना? 2, 10, 5 सेटअप के लिए अगर दिया रहेगा तो कैरिंग कॉस्ट कितना है? 10 पैसे पर यूनिट पर मंथ है. सो 10 पैसे पर मंथ है. पर एनम हमको चाहिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है. ये पर मंथ है, इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 करना पड़ेगा. 1.2. अंडरस्टूड? नहीं, वो किसने क्वेश्चन पूछा था ये सॉल्व करने के लिए? दिस क्वेश्चन हु हैड आस्क्ड दिस टू सॉल्व दिस? ये समझ में आ गया क्या? 10 पैसे इज पर मंथ. सो पर एनम कितना होगा? दिस इंटू 12, 12 महीने. 1.2. सो इकोनॉमिक बैच साइज, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 into 24,000 into 324 divided by 1.2. बराबर? स्पीड मैं ज्यादा स्पीड से जा रहा हूं क्या रे? पक्का? स्क्वायर रूट ऑफ दिस 3,600 यूनिट्स. 3,600 यूनिट्स कितना है इनका भी? 3,600 यूनिट्स. नाउ इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला. सेकंड क्वेश्चन क्या था है उनका? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ऑप्टिमम रन साइज? सो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू EBQ divided by 2 multiplied by carrying cost per unit per annum multiplied by carrying cost per unit per annum. So ये EBQ कितना है? 3,600 divided by 2 multiplied by 1.2. अब ये Q डिवाइडेड बाय 2 किया है, मैंने लास्ट टाइम काफ़ी बार एक्सप्लेन किया है. ₹2,160. ₹2,160. डन? पक्का? आता इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पण रिपीट झालाय तुमचा. यू पीपल हैव रिपीटेड इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑल्सो. नाउ अभी कंपेयर करना है. वो थर्ड स्टेटमेंट व्हाट दे आर सेइंग, assuming that the company has a policy of purchasing batch run of 6,000 units. कंपनी हम लोग बोल रहे 3,600 का करो, वो बोलते नहीं हम हमारा पॉलिसी 6,000 यूनिट्स का है. नाउ यू विल हैव टू कंपेयर एंड शो देम कि आपका कितना गलत है. चलो नाउ कंपेरेटिव स्टेटमेंट करते हैं हम लोग. कंपेरेटिव स्टेटमेंट विथ फॉर टोटल कॉस्ट, statement of total cost for EBQ and policy production, policy batch size, particulars,
EBQ and policy. Batch size. Thank you. गेलं का? गेलं होतं ना? काहीतरी झालं होतं. Policy batch size. Annual demand, annual consumption कितना है? Annual requirement? 24,000. Annual consumption. वो चेंज होने वाला है क्या? वो चेंज होने वाला है क्या? 24,000. यहाँ पे भी 24,000. बैच साइज कितना है? बैच साइज 3,600 और यहाँ पे 6,000 यूनिट्स में है. एनुअल कंजम्पशन इन यूनिट्स, यहाँ पे भी इन यूनिट्स. बराबर. अभी कितना रन लेना पड़ेगा? नंबर ऑफ रन्स लेना पड़ेगा. सेटअप कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दिया है. एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे. टोटल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम फाइंड आउट करके डिराइव करेंगे, कर लेंगे हम लोग. नंबर ऑफ रन्स, नंबर ऑफ कितना रन लेना पड़ेगा? एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय बैच साइज. सो कितना 24 कितने बैच प्रोडक्शन करना पड़ेगा? 6.66. ऐसे होता है कभी नहीं. राउंडेड अप टू 7. राउंड अप करना है. बैच कभी बोलेंगे हम लोग 5.5 बैच बनाएंगे. एक तो बनाना है 5 नहीं तो 6. 5.5 पौने 6 6.66 ऐसा कुछ नहीं है. अंडरस्टूड ना कैसे निकाला लेकिन. और यहाँ पे 24,000 ये राउंड अप है, कोई बात नहीं. नेक्स्ट बैच लेना है, राउंड ऑफ टू नेक्स्ट बैच. अब यहाँ पे मेरा 6.1 भी आता तो भी मैं इसको 7 ही करता, क्योंकि एक बनाने के लिए भी हमको पूरा बैच रन करना है. ठीक है. नाउ सेटअप कॉस्ट पर रन, सेटअप कॉस्ट पर बैच कितना दिया है? 325 है ना? 324. कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 1.25 1.2 है ना? 1.2. So total setup cost, number of setups multiplied by cost per setup. बराबर. नंबर ऑफ सेटअप कितना था? 7. बराबर है ना? इंटू 324. डन. टोटल सेटअप कॉस्ट कितना? सेटअप था 7. सेटअप कॉस्ट पर बैच कितना है? 324. नेक्स्ट कैरिंग कॉस्ट. अभी जस्ट हमने फॉर्मूला लगा के डिराइव किया था. व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट? EBQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. EBQ कितना था? 3,600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज. बराबर. यस और नो? और यहाँ पे कितना आएगा? EBQ इज हाउ मच? यहाँ पे 6,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.2. और इसका बनेगा तुम्हारा टोटल कॉस्ट. दिस विल, और कुछ नहीं ऐड होगा. दिस विल बी योर टोटल कॉस्ट. सो कौन सा बेनिफिशियल है? कंपनी पॉलिसी बेनिफिशियल है या इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी बेनिफिशियल है? EBQ. Okay, understood? Online friends, understood? Those who had asked the query. किसी ने क्वेरी पूछा था, सब समझ में आया नहीं? कम से कम हाँ ना कुछ तो बोलो. साइलेंट जोन में जग गए.
Yes, sir. यस सर अंडरस्टूड सॉल्व ओके कर रहे थे ओके चलो. आई थॉट दैट होली के लिए चले गए कि ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करके. ओके सो इलस्ट्रेशन नंबर 10 एंड एक ही बाकी था क्या? खत्म. तो ये होमवर्क के लिए. होमवर्क आसान है, कर पाओगे, कोई बात नहीं. हाँ ना? हाँ एनर्जी. नाउ एंटरिंग इनटू द नेक्स्ट मेथड ऑफ कॉस्टिंग, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. कोई डिफिकल्टी नहीं है. अब तक कौन सा टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगा? अब तक हमने जितने भी सॉल्व किए प्रॉब्लम्स, विच टॉपिक यू फाउंड इट डिफिकल्ट? कुछ भी नहीं. नन ऑफ द टॉपिक वर डिफिकल्ट. नहीं, मैं देख रहा हूँ आपकी ओर की जॉब कॉस्ट में. आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू आस्क व्हाट यू फाइंड इट डिफिकल्ट इनटू दैट. व्हाट वाज डिफिकल्ट? आवर्स में दिया है तो लेबर आवर रेट में जाना है. आवर्स नहीं दिया है तो परसेंटेज ऑफ लेबर जाना है, डायरेक्ट वेजेस. प्रैक्टिस करो फिर उस पे. ओवरहेड्स, अगर किसी ने ओवरहेड्स अगर बोलता कि मुझे ओवरहेड्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता, देन आई वुड हैव टेकन. ठीक है, ओके. कॉस्ट शीट में तो यस क्या सर है? ओवरहेड्स थोड़ा सा हाँ, ओवरहेड्स है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा हाउ टू डू. और लेकिन ओवरहेड्स भी तो 4 ही मेथड है. ठीक है. अगर कोई बोलता है ओवरहेड्स मुझे थोड़ा सा टफ गया है तो आई विल एक्सेप्ट इट. स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट, जॉब शीट, बैच कॉस्टिंग क्या है? उसमें कुछ भी तो नहीं. मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, नथिंग. ओवरहेड्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. और क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? उसमें कैलकुलेशन है. मशीन आवर रेट, पर आवर रेट फाइंड आउट करना है. एग्जैक्टली. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. कहां पे यूज होगा ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का? वेयर द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग विल बी यूज्ड? कंस्ट्रक्शन. ये बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन किया है, ब्रिज, रोड, जहां पे भी कंस्ट्रक्शन आएगा, जहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट देके किसी को, तो कॉन्ट्रैक्ट देके कंस्ट्रक्शन करवा के लेना है. आपने घर बांधना है, आपको घर बांधना है तो कॉन्ट्रैक्ट ही दिया जाएगा ना उसका. यू विल हैव टू प्रिपेयर दिस कॉस्टिंग. कितना सीमेंट लगा, कितना स्टील लगा, कितना रेती लगा, कितना लेबर कॉस्ट लग गया, कितना ओवरहेड्स, एक्सपेंसेस, बराबर. सो ये पूरा हम लोग उसका कॉस्टिंग कैसा करना है वो अंडरस्टैंड. या इन दिस यू विल फाइंड ओनली वन यूनिकनेस. अभी ब्रिज अपना मेट्रो का चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है? वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ही यूज करते होगे ना. जॉब कॉस्टिंग कर रहे होगे क्या वो? नहीं ना. क्या बैच कॉस्टिंग? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ना. हाँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज कर रहे होगे. नो, ईयर आफ्टर ईयर दैट कॉस्ट विल गेट कैरी फॉरवर्ड टोटल कॉस्ट डिराइव करने के लिए. और कॉन्ट्रैक्टर को क्या, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तब पैसा दिया जाएगा? नहीं ना, वो तो मर जाएगा कॉन्ट्रैक्टर. 5 साल से 1 रुपया नहीं मिला, जेब से पैसा डाले जा रहा है, ऐसा नहीं. सो ऑन कंप्लीशन ऑफ सर्टेन वर्क्स ही गेट्स दैट मनी. ये छोटा सा वर्किंग है, वो लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है. हाउ मच मनी हैज टू बी पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंप्लीशन ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क. हम घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, बोलते हैं 1 प्लिंथ हो गया तो इतना रुपये दे देंगे आपको, 2 प्लिंथ हो गए तो इतना रुपये देंगे. सो हाउ टू डिराइव दैट, वो लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है. अदरवाइज यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट एज सच नहीं है. सो लेट्स स्टॉप ओवर हियर. एंजॉय योर होली. हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू. Next lecture we will start with contract costing. Okay, chalo, bye bye.